Hello. Hello, all of you. Am I audible? Please tell me, am I audible or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, may I know Yes, who Yes, ma'am. attended the first class? First class आप लोगों ने क्यों attend नहीं किया? मैं जान सकती हूँ. What is the reason? Please, may I know? Why Ma'am, people? meeting locked join- था. हाँ? मीटिंग लॉक था, मीटिंग लॉक्ड था। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया पर हुआ ही नहीं। Yes, the meeting locked था. When I have sent everything, the details, he have one of the student have joined. How the meeting is locked? Ma'am, the meeting has been locked. Yeah. I don't know how it has been logged. We have already discussed about group discussion, okay? So you have attended the class and always you people please be sincere. जो time दिया, please try to attend at that time. I don't know why. मैम हम जो टाइमिंग दिया था उसमें 2 मिनट पहले से ही बार बार हम ज्वाइन होने का ट्राई कर रहे थे, पर वहां पे आ रहा था द मीटिंग हैज बीन लॉक्ड बाय द होस्ट। But I और have मैम not. अब तक But I have not logged. ये सबसे बड़ा चीज है. बट मैम अगर यही वही आ आ रहा रहा था, हम लोग भी ट्राई कर रहे थे। Yes, ma'am. But the student have already joined. Okay. No way. I don't know. Now next one, group discussion we have already discussed. It has been continued. Okay. वो continue हमारा हो भी रहा है group discussion. So next point हम अब आते हैं आप लोगों के साथ group discussion. What is the next point of a group discussion? Just see. मैम Yeah. मैम इसमें पार्टिसिपेंट का कोई ये नहीं ना है कि 100 पार्टिसिपेंट ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ? No. तो मैम हम लोगों को तो मतलब पहले ऐसे प्रॉब्लम नहीं आया, आज ही ये प्रॉब्लम आया और बहुत देर तक हम लोग ट्राई किए और हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हुआ, because she is attending. I have called students also. Okay, देखो अब टाइम नहीं है, हम इसको फिर से डिवाइड अप कर देते हैं ग्रुप डिस्कशन का. ओके, what we have discussed about, I am just reminding. So this is a group discussion activity. This is the experiment number 5 है ना. ये experiment number 5 है हमारा group discussion. पूजा ना, पूजा you only attended my class ना. Hello. Yes, ma'am. Yeah, you were only there, attended you up. Now, group discussion, हमारा objectives क्या है? What things you have to write in a group discussion? That what is the group discussion? Group discussion होता क्या है? ठीक है. So, what do you mean by group discussion? Can anyone say me? Group discussion क्या होता है? The effective discussion which is completed in a group to achieve the goal is called group discussion. ठीक है. Next, any opinions? What is the definition of group discussion? A group discussion is that type of discussion that involves you sharing of your ideas or activities, and basically those things are logical. ठीक है, वो हमारा क्या है, लॉजिकल होता है. नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप द डायनामिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, टू लर्न द टेक्निक्स दैट कैन मेक एन इफेक्टिव पार्टिसिपेंट इन ग्रुप डिस्कशन, टू मीट अप द फ्यूचर चैलेंजेस विद सक्सेस, to be familiar with different types of interviews, to develop a complete inventory of skills. ये है हमारा group discussion का objective. These things you have to write in your practical notebook.
ठीक है, ये आप लोगों को अपना प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है. So group discussion. Now I will form a group. Okay, all are from CSEC or anyone is from other branch? क्या कोई दूसरा कोई ब्रांच से है और all of you are from CSE? Electrical is also there, na? So for electrical, civil and mechanical, I am just saying your class is being taken by Momita Shadu ma'am because she is on leave. So I am taking your class. This is my adjusted class with you people. Okay, for CSE and ECE, next week we are going to conduct a group discussion competition. ठीक है, एक group discussion competition है. So, what are the topic for group discussion? I am telling you for CSE branch. For CSE branch, what is the group discussion topic? ठीक है, will बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ abolish the orthodox mindset. Because soon we are having International Women's Day, na? On which day International Women's Day is being celebrated? So I think this is a 8 very relevant. March. 8 March. March. Yeah. So we will going to have this our next class on 5th of March because on 8 we are not having any class. On 5th of March we are having class. So I am giving you this topic. Okay. Got it? For CSA I have given you, na? Or EC? Ma'am, CSE. Yeah, CSE, please note down. Your group discussion topic, every one of you have to prepare three points on this topic. Will Beti Bachao, Beti Padhao abolish the orthodox mindset? And from ECE, I am giving you crime against women. Crime against women. Got it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Now, अब हमारे जो group discussion है, there are certain rules and regulations that you have to follow in a group discussion, which we are going to discuss. अब हमारा क्या होना चाहिए यहाँ 8 to 10 participants because there is no such kind of WhatsApp group for you people right now. So I am giving you per student 3, means you have to prepare 3 topic, means 3 points. ठीक है? Now, next one. The next thing you have to write in your copy, the dynamics of group discussion. Please take the screenshot. Please take the screenshot first. After that, I will say what things you have to write in your note, practical note copy, or what things you don't have to write. Please take the screenshot first. Yes, ma'am. Taken? Yes, ma'am. Next. Take. Yes, ma'am. Next. 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 Next.
Next. Next. Next. Next. Next. Next. Next. Done? Yes, ma'am. Okay. Now, what things we have to write in the copy notebook? Sorry. See, the first thing is that you have to write 1 minute. ECE and CSE will only write in their copies, and civil and mechanical, please don't write, okay? Because for civil and mechanical, what notes ma'am will be giving, according to that you just take, means you just write. Civil, mechanical and electrical, okay? Got it? This is for ECE and CSE, they have to write. Now Okay, ma'am. Okay. Now you can just see that in a group discussion, what things you have to write? Group discussion, this is an activity. ये group discussion क्या है? हमारा activity होता है. This is not an experiment. But topmost you have to write experiment number 5, group discussion, activity 1, introduction. Here introduction you have to write what is the definition of group discussion. Please note it down. What is the definition of group discussion? Please note it down. Yes, ma'am. Group discussion is a type of discussion that involves people sharing ideas or activities full stop. People in the group discussion are connected with one basic idea. Group discussion, para change, okay, you just change the para, right? Group discussion is a discussion that tests T-E-S-T-S, tests the candidates, apostrophe S, candidates में, skills, comma, such as मैम क्या बोली? such as leadership skills, comma, communication skills, comma, तो मैम क्या बोले? communication skills, comma, social skills,
and behavior comma politeness मैम comma कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बोलिए ना. someone phone is continuously vibrating. किसका फोन कंटिन्यू इतना वाइब्रेट कर रहा है? Either you mute your phone this is Soni Kumari from Civil. Yeah, I'm just repeating, okay, again. Group discussion is a discussion that tests the candidate's skills, comma, such as leadership skills, comma, communication skills, comma, social skills and behavior, comma, politeness, comma, teamwork, comma, listening ability, comma, general awareness, comma, confidence, comma, problem solving skills. Got it? Yes, ma'am. Should I repeat Yes, it ma'am. again? Okay, I'm just repeating it again. Please check. Group discussion is a type of discussion that involves people sharing ideas or activities. Full stop. People in the group discussion are connected with one basic idea. Okay. Next, group discussion is a discussion that tests the candidate's skills such as leadership skills, communication skills, social skills and behavior, politeness, teamwork, listening ability, general awareness, confidence, and problem solving skills. Got it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Next, you have to write the dynamics of group discussion. These are the dynamics of group discussion. You just have to write. Okay. How many dynamics are there? There are 12 dynamics. There are 12 dynamics. Up to 6 of you have to write. Leadership, people should listen and agree to you. Up to here. Next one is your group discussion techniques. What are the techniques of a group discussion? These things also you have to write. Now, ये आपको नहीं लिखना है. Different parts of group discussion you don't have to write. Role in group discussion you don't have to write. Okay. Now, types of group discussion you have to write. Type of group discussion topics you have to write. Okay, up to here. You don't have to write this body language also. Do's of participating you don't have to write. Topics also you don't have to write. सब अब समझ में आ गया what things you have to write? कैसे लिखना है? Got it? मैम डायनेमिक्स में सिर्फ 6 पॉइंट लिखना है कोई भी. No. कोई भी 6 पॉइंट नहीं. जिस पूरा 12. ये 12 पूरा लिखना है. यहाँ 6 तक लिखना है. ओह ओके मैम. ठीक है 6 पॉइंट्स है वो 6 तक लिखना है. यस मैम. मैम अब बोली ना अप टू 6 तो ये लगा. यहाँ तक लिखना है. ठीक है. यस मैम. ठीक समझ में आया? Now, हाँ, so
ग्रुप डिस्कशन. अब हमारे क्या ग्रुप डिस्कशन, व्हेन वी विल फिजिकली प्रेजेंट वी विल हैव अ ग्रुप डिस्कशंस. अब देखो डूज एंड डोंट्स. सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? डूज एंड डोंट्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन. तो डूज एंड डोंट्स क्या होना चाहिए? What things should be there in a group discussion? Can you tell? Ma'am, don't interfere between two person if they are talking. Okay. Or And ma'am, do's ma'am, if I want to talk at in a topic, then I should be polite, yeah, not very good. that कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है. Okay. हमको अपना पॉइंट के साथ स्टिक अप नहीं होना चाहिए. यही Yes ना? ma'am. नेक्स्ट और मैम पोलाइटनेस भी. पोलाइटनेस भी. नेक्स्ट क्या है? मैम डोंट में टॉपिक से रिलेटेड ही बोलना है. अच्छा ठीक है. और anything else? Anything else? Anything else? और कुछ को कुछ नहीं बोलना है? क्या हो सकता है? What thing should be there? Please read do's of participating in a group discussion. I am just recalling any one name. Okay. Jatin Kumar, CSE. Please read this one. Jatin Kumar. Yes, ma'am. Yeah, please read the do's of participating in a group discussion. Listen to the subject carefully. Put down your thoughts on a paper. Initiate the discussion if you know the subject well. Listen to others if you don't know the subject. Support you point some fact and figures. Make short contribution of 20 to 30 seconds 3-4 times. Give other a chance to speak. Speak politely. Respect contribution from other members. Disagree politely and agree with what is right. Summarize the discussion if the group has not reached a conclusion. Okay. Have you understood this thing? Anyone is having any problem in understanding these points? No, I've ma'am. written. Yeah. Anyone is having any problem? किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है क्या ये पॉइंट्स? डूज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन? या No, ma'am. नो. ओके. एक लाइन है मैम, शॉर्ट कंट्रीब्यूशन क्या है? 20 to 30 सेकेंड. मैम वो वाला लाइन, मेक शॉर्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ 25 to 30 seconds 3 to 4 times. आप अपना पॉइंट को सपोर्ट करोगे ना. कंट्रीब्यूशन कभी कभी क्या होता है कि रिमार्क्स देना होता है. ठीक है. अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, व्हेन यू आर नॉट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग दैट अगर हमारे पास पॉइंट नहीं है तो शॉर्ट कंट्रीब्यूशन जो हमारा है, तो क्या अगला कोई भी हमारा बोल रहा है तो उस जब वो बोल रहा है तो उसको पॉइंट को हमको अच्छा लगा तो हम उसमें क्या करेंगे? अपना एक रिमार्क्स देंगे दैट आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट व्हाट ही हैज टोल्ड. तो हमारा वो क्या किया, हम उसको कंट्रीब्यूट किए कि नहीं? यस मैम. तो कंट्रीब्यूट हम कैसे कर सकते हैं? अपने सोच से, अपने लिसनिंग पावर से और अपने स्पीकिंग पावर से. तो कंट्रीब्यूशन, एप्रिशिएशन. ठीक है. एक एप्रिशिएशन होता है. वन, आप किसी को मुंह पर बोल सकते कि वो खराब है. हम बोल सकते कि नो, आई एम टोटली नॉट
क्या बोल सकते हैं? आई एम नॉट एग्री विथ योर पॉइंट. हम क्या बोलेंगे? आई एम नॉट टोटली एग्री. तो वो भी क्या बोलेंगे? मैं अपना पॉइंट बोलूंगा, मेरे को गलत है, वो अपने आप को सही साबित करने का कोशिश करेगा और आप उसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे. So what you will say that I don't feel like this, that this is a relevant point what Mr. Shyam has told or Sumit has told. ठीक है? तो ये हमारे क्या है? किसी ने एक पॉइंट दिया, उसके साथ हमने उसको अप्रिशिएट किया या फिर हमने उसके साथ डिसएग्री. Anything more? No, ma'am. Ma'am, put down your Initiate thoughts the on a discussion paper. if you know the subject well. ये समझ में नहीं आया. क्या क्या क्या? Ma'am, third point, initiate the discussion if you know the subject. फर्स्ट इनिशिएट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएट? पहले ये आपको पता बोलिए, हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएट. पहले हमको ये चीज बोल दीजिए, उसके बाद पूरा सेंटेंस समझ में आ जाए. You know, if you don't know the subject, don't start. Start करना, आरंभ करना. Initiate means to start something. That means if you don't know the subject, please don't start. Got it? इसलिए मैंने बोला Okay, ma'am. initiate. पहले initiate का मीनिंग समझ जाओ कि what is the meaning of initiate. तभी आपको पूरा स्टोरी ही समझ में आ जाएगा, पूरा फंडा ही क्लियर. Got it? Anyone any more problem? Ma'am, second line, put down your thoughts on a paper. पेपर में नहीं लिखोगे, भूल जाओगे तो क्या होगा? Have you seen your mother father when they are going to a shop to purchase the grocery, they write in a paper कि क्या क्या घर के लिए खरीदना है? Have you seen? Yes or no? Yes. तो सेम चीज अगर आप अपने थॉट्स को पेपर में लिख के नहीं रखोगे तो आप भूल नहीं जाओगे बोलने टाइम. Yes, ma'am. Okay, got it? Now don'ts of participating in a group discussion. Now what are the don'ts? Don'ts. Who will speak? Don'ts. Kaushal Raj, please you read don'ts of participating in a group discussion. Please read it. क्या है don'ts? Read. कौशल राज. हमको लग रहा है सो गया ना क्या कौशल राज? No, कौशल राज. Yeah, कौशल. Your voice is not audible. Ma'am, network problem. Ma'am, network problem. Okay, you just read. Don'ts of participating in a group discussion. कभी कभी इंसान नेटवर्क प्रॉब्लम से आउट भी हो जाता है, पता है? There are many persons who just get out of this network problem. Okay, next one is Anurag Singh. Anurag Singh, you are also having network problem? I don't know, Anurag. Anushka Kumari. Yes, ma'am. Yeah. Initiate the discussion if you do not have the sufficient knowledge about the given topic. Overspeak, intervene, and snatch others' chance to speak. Argue and shout during the GD. Look at the evaluators or a particular group member. Talk irrelevant things and distracting the discussion. Pose negative body gesture like touching the nose, leaning back on the chair, knocking the table with a pen, etc. Mention erratic statistics. Display low self-confidence with shaky voice and trembling hands. Okay, anyone is not having any problem over these points? Last second, ma'am.
What? Yes, Mention ma'am. your Mention erratic static. Erratic statics. erratic means what? Word का मीनिंग को समझो. What is the meaning of erratic? Erratic का मतलब क्या होता है? Your behavior, a person's behavior. Okay. Your behavior. हम बोलते हैं ना वो कितना मनमौजी टाइप है. वो मनमौजी है. वो कितना सनकी है. हम लोग बोलते हैं इसको. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब अपने एटीट्यूड से इस तरह से कोई भी काम मत करो जो कि ऑड दिखे. ठीक है. Don't show such kind of attitude or behavior जो कि acceptable नहीं in a group when you are. Okay. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, next point I am coming with you people about group discussion. Whenever you are participating, do's and don'ts we have already done. ठीक है. अब जो हमारा होता है बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज में क्या है? पॉइंटिंग फिंगर्स, प्लेइंग विथ पेन और पेपर, स्टॉपिंग और स्लॉचिंग. पता नहीं कोई कोई बैठा रहता है इधर उधर अजब टाइप का गजब टाइप का टेढ़ा मेढ़ा बैठता है. So that is stooping or slouching. Sitting with cross arms or legs. It doesn't seem good when you put your legs upwards. आप किसी के साथ ग्रुप में बैठे हुए अपने बाबू साहेब टाइप का पैर उठा के हाथ को एकदम ऊपर उठा के अंगड़ाई ले रहे हो. Throwing your hand. होता ना किसी किसी को हाथ में झटका मारने का होता. ओ बहुत देर बैठ का कर गया शरीर. Okay. The fidget. मतलब होता है ना किसी को बाल, especially the girls having this बाल पे बार बार हाथ देना. Boys used to do their spikes. Don't do like this types of things. Do not to be stiff. Scratching, pricking, rubbing your hands. मतलब थोड़ा इंसान जैसा ग्रुप डिस्कशन में रहो in a proper manner. Try to control your facial expression. तंग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी अजब गजब टाइप का आईब्रोज उठा के एकदम तंग टाइप का चेहरा बना के. Don't do these types of things. Facial expressions. ज्यादा जोर से भी मत हंसो. If you are thinking that he is not telling any relevant point, ठीक है. Don't get frustrated. Angriness कभी कभी लगेगा वो तब से बोले जा रहा है. I am not getting my chance. So group discussion में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? Now I am coming. I will stop my sharing now. Now एक group discussion में हमारा सबसे important अब points क्या क्या आ गया है? कोई बोल सकता है in a very short time? क्या है important points? कि हमारे आपस में unity होना चाहिए. We should have a unity among us. And next thing is that हमको ग्रुप डिस्कशन जब हम लोग बैठेंगे करने उससे पहले हम लोग में होना चाहिए कि आफ्टर हु और whom we will speak. किसके बाद कौन बोलेगा. एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमको फर्स्ट इसको सजा लेना है. अदरवाइज अगर वो उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, देयर वाज एक हड़बड़ाहट रहेगा. सो एक सीक्वेंस बना लेना है आप लोग को अपने अंदर. जिसके बाद हम बोलेंगे उसके बाद वो बोलेगा. और हमेशा ट्राई करना अपना पॉइंट्स को शेयर करने के साथ अपने ग्रुप्स के साथ. उससे क्या होगा, किस पॉइंट के बाद कोई अगर उसको कंक्लूजन टाइप बोल रहा तो उसको हम पहले नहीं बोल सकते. कोई नेगेटिव बोल रहा तो उसको भी हम पहले नहीं बोल सकते. सो इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर यू ट्राई टू स्पीक. अभी ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज नॉट वी आर इन अ फिजिकल मोड. But a time will come we will be in a physical mode. At that time you have to make a group discussion strategies. Any problem anyone?
किसी को कोई समझने में दिक्कत तो पूछ सकते हैं. Any problem? Okay, so next बोल दिए next class का topic क्या है और each student of CSE and ECE have to speak 3 points. Okay, clear? Okay. Yes, ma'am. Okay, Yes, thank ma'am. you all of you. I am ending the class. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.